In Java, when you write a program, first you have to define the class keyword. So for defining a class, then class name is used. Then class name is used. So class is a keyword for defining a class in Java. So in Java, is not starting with any kind of header file. It is a optional part. When there is a requirement, you have to use it. But to use or to write a program, we have to write a class. So class, then class name. Suppose I define a class, then class name is demo here. The class name is demo. Okay, so class, then class name is demo. Then for writing the program in Java, what we have to use? So normally as a beginners, we have to use a text pad. So here I define class demo. Then I define a main method. A public static void main string here this. Then for display anything, we're writing here system dot out dot println. This is my first class. Okay, so it is a way of writing the program. I'm not saying what is all the keywords. Now you have to save the program. Demo program. Okay, so now you have to save the file. आमे file टाको save करिबा. तो ए क्लास नाटा जहा रहिबो आमे तले फाइल टा सेव करिबा, फाइल नेम टा शेयर रहिबो. तो क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम. क्लास नेम एंड फाइल नेम मस्ट बी सेम. गोटे प्रोग्राम रे आमे एक रो अधिक क्लास डिफाइन करि परिबा, किंतु जो क्लास रे हमर ए जो मेन मेथड टा अछि हमर फाइल टा सेही नेम रे स्टोर होबो. बुझि पारलो गिरिजा? आज्ञा सर. आम गोटे प्रोग्राम रे आमे एक रो अधिक क्लासेस डिफाइन करि परिबा, किंतु मन रखो जो क्लासेस रे हमर मेन मेथड अछि हमर फाइल टा सेही नेम रे सेव होबो. तो एठी रहला डेमो प्रोग्राम. तो मो ए फाइल टा को डेमो प्रोग्राम माटा रे सेव करिबो. तो मु कोन से ड्राइव को गली, ड्राइव रे मु एठी सेव करूची. So class demo program system.out.println. This is my first class. Now what happened? We have to run the file.
colon enter Java C is the compiler name. Mu D drive को जिपा पाएंगे D colon enter only ଆଜ୍ଞା demo program dot Java. ଯାଅ And for execution, I read it Java demo. ଆଜ୍ଞା Then it is showing you this is my first class or first program. Anything you can do. Now I explain what is written over there. Class So class is a keyword for defining class in Java. So class is a keyword for defining a class in Java. So here demo program is a class name. Public is called access specifier. Okay. Means we can access main method everywhere. Public is called as the access specifier. That means we can access the main method everywhere. So main method is always public. So we learn about abstraction and encapsulation. So this abstraction and encapsulation is implemented in the programming by using of access specifier. So public is called as the access specifier, means you can access your elements or access your main method anywhere. Okay, so you write the program anywhere. आमे program लेखिबा ताको different जगह रे store करिवा किंतु जेतरा program टा run हुए एई जगह रे ही run हबो एटा होची brain माने heart of the program. Public static void main string args is called as the heart of the program or entry point of your program. तो मैं एटा लिखि दउची अपर लिखिबा public टा होची हमर access specifier we can access the main method everywhere if you define as a public. Public हेले main method को हमें सब जगह access कर परिबा जे जो जगह रे प्रोग्राम करिवो किछि प्रॉब्लम नै से माने access कर परिबे कोठी ना main method. Static means constant, only one copy of given object is created. So static means what? माने मेन मेथड एक गोटे सेम प्रोग्राम रे मेन मेथड ना रे आमे आ कोनोसी डुप्लीकेट मेथड बनै परिबा नै. So that we define as a static. So why we define static? Now when you define a static, then you cannot create a duplicate function in a same program. So that we define main method as static. Then void. Void is called
return type. Void is called return type. So it doesn't return any value. Void is a return type which it doesn't return any value. ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ function ଟା process କରିବା, function means what? It is processing the set of instruction. ଯେତେବେଳେ ଆମେ set of instruction process କରିବା ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ output ଦବ। ଆମେ ଯଦି void लिखवा if we are not expecting that your function is return some value or function किसी value हमको दबा ଆମେ ଯଦି କିଛି expect न करिवा तो से जगह रे void ଆମେ लिखि परिवा। तो एई जो return type जगह रे is called the return type ଆମେ अलगा को return type लिखि परिवा। ଆମେ int गोटे return type अछि जो डाटा तमे return करिया को expect करतबो से return type लिखि परिवा। float लिखि परिवो, string लिखि परिवो। जदि मते string लिखिबी public static string then मु यूज करी माने मु एक्सपेक्ट करबी जे मो मेथड टा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करिवो। तो इफ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एनी value that the function is returned to me, so at that cases I use this void return type. And main is what? Main is called the main method. जे main method entry point of program all program execution starts from here. All program execution start of program, it is called the entry point of program. You can say it is a heart of program. Okay, माने हमर जहाँ भी program execution हुए बा program जेतेबेले हमें run करू JVM प्रथमे खोजे तार main method टा कोठी अछि माने heart टा कोठी अछि सेरा खोजी सला परे then से हमर processing start करिवो। So JVM always looks after the main method. Main method कोठी अछि ताको से get find out करिवो। once से find out कला परे तापरे से next को जीवो। So it is a main method. Then next we are using here string args. It is an array which is used to pass and receive the information. So it is a array, it is used to pass and receive the information to command line argument. आमे जो command line argument एटा जो command prompt open करूचे एठी आमे किछि information pass करिवा। ए information एठी store हबो। एठू आमे डाटा को डाटा main method को pass करि परिबा और main method डाटा को receive करि परिबा। So that is called the string array is an array.
okay it array or we can say it is a parameter okay तो एटा को हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट थ्रू रे हमें जहाँ वैल्यू दबा माने ए कमांड प्रॉम्प्ट रे जहाँ वैल्यू दबा इनपुट दबा से इनपुट टा एठी स्टोर होबो यदि इंटीजर वैल्यू दोचे एटा स्ट्रिंग लिखा आइछि ताहु हमें ताको पर्टिकुलर इंटीजर कन्वर्सन करके हमें हमर वर्क परफॉर्म करिवा तापर होछि सिस्टम सर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट जेत न देकि तबे प्रोग्राम माने यूजर इनपुट जेते बेले दबो एठी कोन स्ट्रिंग एजेस न बने मेन मेथड सब बेले स्ट्रिंग एडजस्ट रहिबो बुझिला किंतु हमें जेते बेले बेसिकली एटा यूज करा जाय कोन पई ना धर हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट किछि वैल्यू दबा जेते हमें कंसोल बेस एप्लीकेशन बनेबा बा जो कमांड बेस एप्लीकेशन बनेबा से एप्लीकेशन ने जेते बेले जहां हमें इंपुट दबा से जगह रे स्टोर होबा बुझिला आज्ञा से पैरामीटर टा दबा को दरकार पड़ी तापर होछि सिस्टम सिस्टम इज ए predefined is a predefined class system is a predefined class the system dot out system dot out is a variable of print string class system dot out is a variable of print stream class println is a method which is used to display text on screen in a new line जब हमें प्रिंट मेथड भी यूज कर परिबा is used to display information on screen in same line এটা print করবে এটা next line को जीवन so these are the basic command that we are using while we are writing the first program in Java the compiler name is what the compilation steps तो फर्स्ट हमें कौन लिखिबा ना फर्स्ट हमें लिखिबा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा then java only file name এটা হচ্ছে for compilation এটা ইউজ করিবা for execution the compilation ପାଇଁ यूज होला এটা it is used for compilation and java file name is used for execution now we run the file okay so now it is the first program that is over then I start with the another concept that is called as how to call the method so in previous class we have discussed method or function is what it is a set of instruction which is used to do a specific task if you want to do a specific task we are called as a function we're defining a function we're defining a method like when you going to the ATM machine is having a different option like cash withdrawal mini statement and like you can say what like mini statement then cash withdrawal
then inquiry, balance inquiry. So these are the functionality it has, like what your that kind of ATM machine is having that kind of option. Okay, the similar way, for defining that option, we are using the method. Method contains the set of instruction, and all the method is used for unique purpose. For defining a method, what is the process that you have to use? The syntax for defining a method. The method contains the set of instruction which is used to do the specific work. Method contains set of instruction which is used to do specific tasks. Method contains the set of instruction which is used to do the specific task. So for defining a method, first or syntax for defining a method. The first process is, first we have to define access specifier. Then we define then function name. Then here without access specifier, then access specifier without parameter, without access specifier without parameter. So parameter is what? Parameter is acting as a bridge between the calling code and function. Means when you call the function, आमे तला function को call करिवा, function कहिबा जे मते किछि value दियो मु ताको process करिवि. तो सेई जो value टा से हमको मागिवो सेटा as a parameter हिसाब रे pass करा जाय. So what is parameter? Parameter is used to pass and receive data to function or runtime. So now what happened? We have to define our example first. हम केंद्र नोची इटा केंद्र define our public access specifier है public, then void function name है display. Suppose मैं define करीबी int num इटा है the function. Next सिगोची जे without return type. So void display third parameter हमें define करीबा कौन
डिफाइन करिवा फोर्स पैरामीटर रे डिफाइन करिवा void display then for calling the function, so these are the way we define the function parameter without parameter. Then suppose when you define a function, suppose I define class demo. In the demo class, suppose I define a function void display function, then void show function with integer type of parameter int a, then void funs one function with string parameter. Now define a main method. I define a main method. So I creating a object of class demo I equals to new demo. Demo I equals to new demo. So we are creating the object of class. Then I dot. So throw the object. So first we have to create a object of class. The class object केमती बनाबो ना class रा name mention करिवा object इटी pass करिवा any name आमे pass करि परिवा then new demo एटा एक जे कोनोसी name pass करि परिवा तो एई object through रे object है गला कोन instance एई object through रे मो function को call करिवि I dot display ए function टा को call कली पुनी show function को call करिया गले I dot show function इटी call हला show function ए value कोन अछि integer अछि त म इटी pass कली 50 then I dot funs function, so we are passing hello. Okay, if it is a string function, then I pass hello. If it is an integer function, int show 50. Okay, and then I dot display. So I create the object of class. Demo I equals to new demo. First I'm a class रो object बनेवा. Class name, object name, ए name टा में जहाँ भी दे परिवा. जो ऑब्जेक्ट है बनेवा से ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें डिस्प्ले फंक्शन से फंक्शन टाको कॉल कले डिस्प्ले फंक्शन कॉल कले शो फंक्शन कॉल कले देन फंक्शन एटी पास कले देन हेलो पास करछि बुझि पारलो आज्ञा सर then I show how to actual write the program सेव कर दे
ओके तो एटा हला हमर फंक्शन रो एग्जांपल मोड देखि दउची see there here I define a class demo method it class ro na pass kali demo method int a it is a member variable and here I define a function void show function एटी मोर show function रहले एटी मते देखिबो this is a member function आ गोटे function मो define कली void display function दीटा function रहले एटा normal function एटा हला हमर कोन ना parameterized function एटी हमर parameter रहले अच्छा मु अगर कोन कहितली ना जेते बेले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा क्लास रो जेते ऑब्जेक्ट बनेबा त एटी मुले पास कली कोन डेमो मेथड क्लास नेम I इक्वल्स टू न्यू डेमो मेथड I टा हला ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें मेंबर्स को कॉल करिबा तो क्लास रो गोटे मेंबर अछि वेरिएबल तो केमती कॉल करिबा ना I डॉट डॉट मींस एक्सेस हमें कहा को कॉल करिबा ए को मु कॉल कली एटे मु इनिशियलाइजेशन कली 20 सेमती आ गोटे ऑब्जेक्ट हला I डॉट शो फंक्शन मु कहा को कॉल करिवि ना शो फंक्शन को कॉल करिवि जेता शो फंक्शन को कॉल करिवि देखिबा दिस इज मेंबर फंक्शन तापर मु कॉल करिवि कोन I डॉट डिस्प्ले फंक्शन जेता मु डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूची just a minute
सॉरी देखो एटा देखो आमे जेतला डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करबा आई डॉट डिस्प्ले त डिस्प्ले फंक्शन को आमे जेतला कॉल करछे ए डिस्प्ले फंक्शन ने गोटे अछि आईएनटीबी हेले मु एटी 50 माने इंटीजर वैल्यू हला त 50 टा जेके एठी स्टोर हला एठू आसीला पुनी स्टोर हला कोठी x रे स्टोर हला तो एटा देखिबा दिस इज पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू हला x जो पैरामीटराइज फंक्शन वैल्यू हला हमर 50 ओके तो एटा हला हमर टोटल माने कोन माने ए वैल्यूटा गला तापर एठी हमर देखिबा द मेंबर वेरिएबल वैल्यू जोटा हम एठी स्टोर करथले एठी भी देखिबा 20 शो करियो तबे मु रन करछि प्रोग्राम टा तो फर्स्ट देखिला दिस इज मेंबर फंक्शन जेताला हम एटा को कॉल करछि आई डॉट शो एटा शो गला दिस इज मेंबर फंक्शन जेताला मो पैरामीटराइज अछि आई डॉट डिस्प्ले तो 50 टा एठी इनिशियलाइजेशन हला तो देखिला दिस इज पैरामीटराइज फंक्शन 50 तापर हम जेताबेले एटा एटा तापर एग्जीक्यूट हला मेंबर वेरिएबल वैल्यू इज आई डॉट ए बुझ पाइला गिरिजा बुझियला आज्ञा सर बुझिली ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी पढ़ेगा आज्ञा सर।